Welcome to Techno Herald Online. Today we are going to start lesson number 8. In this lesson we will study about energy present in the electrostatic fields, and at last we will discuss some questions in electrostatics. Now we will move to the next topic, that is energy density in electrostatic fields. So in order to find out the energy present due to n number of the charges, we tend to find we need to find how much energy or how much work done was being done in bringing or assembling the charges. Suppose that this is a space, okay, and we need to assemble plus Q1 charge plus Q2 charge plus Q3 चार्ज. हम यहाँ पे एक स्पेस ले रहे हैं जहां पर इनिशियली देयर इज नो एनी चार्ज, बट वी आर ब्रिंगिंग द प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज एंड द प्लस Q3 चार्ज टू दिस एम्प्टी स्पेस. ओके, देन अगर हम सबसे पहले Q1 को लाएंगे, एंड सिंस this space has got no any initial charge, so यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. In that case, work done is bringing the plus Q1 charge will be equal to 0. उस केस में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा. Okay? So in order to find the energy present in an assembly of charge, we first need to find the energy present or the work done in bringing these charge. So suppose plus Q1 plus Q2 and plus Q3 charges are being assembled okay. Since initially there were no charge present in the space, initially there were no charge present in the space, so work done in bringing plus Q1 charge will be equal to 0. क्या है कि शुरुआत में ये स्पेस एम्प्टी है, दैट इज इट डज नॉट कंटेन एनी चार्जेस, तो उस वक्त कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा. एंड इन दैट केस व्हेन वी ब्रिंग द प्लस Q1 चार्ज फर्स्ट, देन नो वर्क विल बी डन. ओके, नाउ अब हम क्या किए कि यहां पे प्लस Q1 चार्ज आ गया. नाउ वी ब्रिंग द प्लस Q2 चार्ज, देन इन सच केस work done in bringing plus Q2 charge, work done in bringing plus Q2 charge is equal to plus Q2 into
V21. Okay, where V21 is the potential at the point P2. Let's say this is point P2, this is point P3, and this is point P1. Okay, where V21 क्या है? Potential at point P2 due to plus Q1 charge. So work done in bringing the plus Q2 charge at point P2, slide it, at point P2 is equal to plus Q2 into V21, where V21 is equal to potential at the point P2 due to Q1. Now, work done in bringing plus Q3 charge at point P3 is equal to plus Q3 into V31 plus V32, where अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में एट द पॉइंट P1 हमने प्लस Q1 को रखा. इन दैट केस वर्क डन वाज इक्वल टू 0 सिंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम. अगेन आफ्टर वी हैव प्लेस्ड Q1 at the point P1, we bring the plus Q2 charge at the point P2. In that case, work done was